Assalamu alaikum ji. Welcome to another seminar in PIDE. I'm very happy to welcome Murtaza Haider. Murtaza is an old friend and mashallah one of our best young academics up and coming. Not up and coming, already arrived. He has mashallah a huge range of publications, but most important of all, he also writes a weekly column in Canada, which appears in about 10 or 12 Canadian newspapers nationally across the country. So he has a very, very big readership there. He's also very creative, not only in urban studies, but also in data science, econometrics, etc. So he's got a wide range of things that he does. And he's one of the key people, as far as urban economics goes, that I rely on in Pakistan to learn from. So I think it's a rare opportunity to be able to hear Murtaza and get his views. I think he'll have a number of things to say that will wake us up and make us think again. And I want to know who is going to make a report. Murtaza, what we try and do is make a report on every seminar. Absolutely. So that it remains alive for people. So who is going to make a report for this now? Anybody identified, Nasir Sahab? Huh? Okay, good. You have somebody else, can I? You should have somebody else to do it too, because we need to get these reports coming out very fast. I need to see this tomorrow, day after, soon. Okay? Okay. Chalenji, with that, let me welcome Murtaza Haider. Aye, Murtaza. Thank you very much. Bahut shukriya. It's really an honor for me to be here today, primarily because I have always held PIDE in great esteem. I used to visit it a long time ago when Ashfaq was here, and I was at that time, really a young professor at McGill University in Montreal. And I have fond memories because whenever I would arrive here, I realized that half the staff here was already a Canadian citizen. Because they always, half the staff was actually, their homes were my homes, they were my neighbors in Montreal or in Mississauga. So I don't know what the status is now, but it was almost feeling like I'm returning home. मुझे सिर्फ ये बताइए कि हाथ खड़े करके स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? Okay, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ. So today's presentation is for you only, and it's dedicated to you. I hope that you embrace urban economics as a subject of interest, primarily because the economics of urban systems is not a priority either in teaching or learning in Pakistan. I can't recall if anyone ever did a PhD in Pakistan under urban economics as a focus. Right? So people do some casual work here and there, but urban economics, have we ever produced an urban economist from Pakistan? I don't think. And again, मेरी लाइलमी हो सकता है मेरे आड़े आ रही हो, मगर मैं किसी पाकिस्तानी अर्बन इकोनॉमिस्ट से अभी तक मिला नहीं हूँ. मुझे इस फील्ड में अब 26 बरस हो गए. So I hope that this presentation at least convinces one of you to take your research, whether you're doing MPhil or master's or doctorate, focusing on urban challenges in Pakistan. A quick introduction. I'm a professor of real estate management at Ryerson University in Toronto. We are based in Toronto, right in downtown. At Ryerson, I'm also the director of the Urban Analytics Institute, which is a data-centric institute focusing on urban challenges and trying to find solutions for them. And I have requested Nadeem Saab that it will be an honor for being able to have a sister institute set up here at PIDE to collaborate with the Urban Analytics Institute at Ryerson University so that we can take collaborative work together. I also am a very applied person, so I also run a consulting firm which does applied projects in urban systems. It's called Regionomics. By way of training, I'm a civil engineer. I have a bachelor's, master's, and a doctorate in civil engineering. But my work at the master's and doctorate level were focused on, first master's on forecasting housing prices, so I spent a lot of time on hedonics. And then the doctorate research was building large-scale models of urban growth. So I built simulation models to forecast where people live, where they work, where will they work, how they will travel,
so a comprehensive model of urban systems. And I was part of a very large team that was building those models, and in my particular role in that large team of about 30-40 people was to build models of housing supply. How can you build more new housing? What to build, when to build, where to build, how to build were the questions that I addressed in my work. And then since then I've been a professor of infrastructure engineering at McGill and then of real estate management at Ryerson. I have a passion for econometrics, so I ended up collaborating with IBM and I wrote this book, Getting Started with Data Science, which is a hands-on approach to doing econometrics. I had some experience here where about 20 years ago there was a certificate in econometrics, and I noticed that bulk of that certificate was on theory, as if we are preparing theoretical econometricians for work. And the reality is that theory should only be taught to PhD students in econometrics. They need to know the blue estimator, the best, least, unbiased estimator. The rest of the society, the applied colleagues, they should focus on applying the models. So what happens is you spend 6 months in a certificate and then you barely run an Excel-based regression, not even knowing how to deal with robust standard errors and whatnot. So with that in my background, I wrote this book with IBM, focusing on the application of econometrics in everyday problems. Obviously, with my interest in urban systems, the bulk of the problems I address in it are focused on urban systems. तो अगले 45 मिनटों में मैं क्या करूँगा? इरादा 45 का अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा. I have been told that we have this room till 12:30, तो मैं 12 बजे तक ये काम मुकम्मल करूँगा. And I really hope कि फिर आप मुझसे सवाल पूछें. And I think the highlight of this presentation would be the question answer session with you. तो बिला तामुल पूछिएगा. मुझे सवाल का जवाब देने में बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो मैं देख चुका हूँ, उसमें मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. मेरे लिए जो नई चीज़ होगी जो आप मुझसे दरियाफ्त करेंगे. So the agenda is the following. I'm going to talk about the urbanization of everyone. Pakistan is urbanizing, has been urbanizing, and there are different opinions about it, how much of it has been urbanized. I would say that there's even controversy about what is urban in Pakistan. ये भी नहीं पता कि urban की definition क्या है, and then we'll discuss that. The challenge that we have is the rapid population growth, not just in urban areas, everywhere in Pakistan. But surprisingly, the fertility rates and population, at least the fertility rates, are not much different between the urban and rural populations in Pakistan. So then that raises a whole host of other questions that I would not address. But then, in addition to fertility rates, you have other big stimulus for growth in Pakistan in the urban regions, and we'll discuss those. Then the challenges that I see from an urban point of view is that I see job creation, urban job creation, not a priority. The discussion about urban systems is often about transportation and housing and other sanitation and water supply. But then when I studied urban economics, right, when I looked at Alonso's model and Muth and Edwin Mills, and the very definition of an urban system, an urban place, is a place of commerce. आप शहर क्यों आते हैं? काम के लिए आते हैं ना. ये तो नहीं कि मैं बस में बैठूंगा, मेट्रो बन गई है, ट्रेन में बैठूंगा, इसलिए तो नहीं कोई शहर आता है. ज़ाहिर है कि कारोबार होगा, कोई नौकरी होगी, कोई वजह होगी. So getting the economic engine going in urban centers, that is the focus in the rest of the world. But in Pakistan, that's not even I have not seen a presentation or a speech by an elected or unelected representative saying that in the last month these many jobs were created in Karachi compared to the 2015 when in January X number of jobs were created. And I'll tell you a story about it. Let me tell you the story right now. I worked as a data analyst at Nesbitt Burns. Nesbitt Burns is Canada's largest brokerage firm, जहाँ ये stock वगैरह के होते हैं. And our trading floor had about 5,000 computers, but 3,000 people. It was a very amazing place to work, and I was at the bottom of the totem pole. मैं सबसे junior आदमी था जिसका काम ये था कि सुबह आके faxes उठाना, उनको फोटो कॉपी करना, ट्रेडर्स के डेस्क पे रखना, उसके बाद शाम में जब वो ट्रेड्स हो जाए उनको फिर डाटा एंटर करना, उनको एनालाइज करना. तो जब मैं पहले हफ्ते वहाँ गया तो अचानक जुम्मे को, पहला जुम्मा जब मैं वहाँ काम कर रहा था पहले ही हफ्ते में, जब मैं सुबह 7 बजे वहाँ शुरू करता था तो कोई इतनी हलचल नहीं होती थी. लेकिन पहले जुम्मे को, द फर्स्ट फ्राइडे
of my work, my being there, थोड़ा सा एक हलचल मची हुई थी. हर शख्स परेशान फिर रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा और सबकी आंखें जो हैं वो कंप्यूटर्स पे लगी हुई हैं. मेरे पीछे एक ट्रिकर बोर्ड होता है, सब ट्रिकर को देखे. ठीक हो 8 साढ़े 8 बजे अचानक सारा ट्रेडिंग फ्लोर जाग जाता है और हर एक 2 फ़ोन उठा के फ़ोन कर रहा है. दिस इज़ अबाउट 1994-95 और मैं ये सब हैरानगी से देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, ये सारी भौचाल क्यों आई है, किसको फ़ोन करें. The bottom line is, on the first Friday of every month, the American government releases the non-farm payroll statistics. Non-farm के जो एग्रीकल्चर निकाल के जो है ना कि पिछले महीने कितनी नौकरियां चली, अगर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो यू विल फाइंड प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट्स. आपको लगेगा कि ये आप कुछ सोचेंगे इंटरेस्ट, अगर वो एक्सपेक्टेड से कम है so there will be less pressure on bringing the interest rates up or down. So you probably think that status quo would prevail. और फिर वहाँ से इंटरेस्ट रेट्स की स्पेकुलेशन से फिर बाकी इकोनॉमी में स्पेकुलेशन, फिर इक्विटी और बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम्स एंड एवरीथिंग, वो फिर सारा उससे फ्लो चलता है. फिर लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ओके आई एम गोना ट्रेड द इक्विटीज इन फेवर ऑफ बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एंड व्हाट नॉट. कभी सुना पाकिस्तान में नॉन फॉर्म पेरोल किसी ने मंथली क्या एनुअल भी रिलीज किया? अर्बन रूरल का बताया आपको कि पिछले साल कितनी नौकरियां बनी, कराची में कितनी थी. ये सबसे बड़ा शहर है हमारा, कितने लोग काम करते हैं हमें नहीं पता. सो दैट्स वेयर आई थिंक, अगर आपको जो है ना कि इफ यू कैन मेजर समथिंग यू कैन फिक्स इट, राइट. अगर पता ही नहीं है कि द साइज ऑफ द लेबर मार्केट वो किस स्टेट में है, देन हाउ डू यू फिक्स इट? एंड देन यू ट्राइंग टू, द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी सिटीज, एंड देन वी कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द स्टेटस और द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम्स इन पाकिस्तान. इस इतनी हद तक इग्नोरेंस के साथ चाहे आप कितनी पीएचडियां कर लें, आप डेंट नहीं लगा सकते इस सिस्टम में. तो हाई फर्टिलिटी रेट्स, इट्स अ बिग चैलेंज एंड आई विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट इट लेटर. और माजरत के साथ मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टोटली इकोनॉमिक डिस्कशन होती है लेकिन लोग मजहबी तौर पर उस पर नाराज़ हो जाते हैं. सो मेरी तरफ से माजरत पहले कबूल कर लीजिए. मेरा मकसद हरगिज़ किसी की किसी को आज़ारी नहीं है. मैं देखिए ये पढ़ाने का काम तबलीग का काम होता है और मुबल्लिग अगर किसी की दिल आज़ारी करे तो फिर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा. तो मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूँगा, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि एक नुक्ता नज़र का इजहार करना है, किसी की दिल आज़ारी मकसूद हरगिज़ नहीं, बट इट हैज़ टू बी सेड. देन एक तो हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं और अदर रीजंस हैं, फिर शहर भी बड़े हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है. फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको एक ही बकेट में डाला जाए. We have to put everybody in Lahore, everybody in Faisalabad, everybody in Karachi. नया शहर नहीं बनाना हमने. क्यों नहीं बनाना? मुल्क बनाया था आपने कोई 1/3 पॉपुलेशन बेस से, अब इतनी बड़ी आबादी हो गई है, कोई कहता 20 करोड़ है, कोई कहता 22 करोड़ है, क्या पता कितने करोड़ हैं. शहर उतने ही है, नया शहर हमसे नहीं बन के दिया, तो फैलते गए. So the failure to establish new cities so that we can relieve pressure on the existing cities, that conversation has never taken place. And then there is supply side failures. एक होता है ना, आपने दुकान शुरू की, कोई आ ही नहीं रहा, बैठे हुए इंतजार में, डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की. हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, डिमांड ही कोई नहीं. एक होता है सप्लाई साइड फेलियर. लोग पैसे लेके सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको चीज़ दस्तयाब नहीं. अर्बन सर्विस डिलीवरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान हैज़ अ सप्लाई साइड फेलियर. लोगों के पास पैसे भी हैं, देने को भी तैयार हैं, प्रोवाइड करने वाला कोई. So I'll talk about that. And then what to do with urban economic development, कुछ ख्यालात उनका इज़हार करूँगा. And then lastly, if I get the time, because I'm a civil engineer, my approach towards building cities is a very engineering focused approach. I look at the infrastructure, I look at the fundamentals of infrastructure, I look at the supply chains that are required to build 5 million homes. 5 मिलियन घर बनाने के लिए कितनी रेत चाहिए, वो सिलिका आएगी कहाँ से, वो सिलिका का कंटेंट कितना होना चाहिए, उसको किस ग्रेड की सीमेंट से लाएंगे, फिर स्टील कहाँ से उठाएंगे, स्टील की सप्लाई चेन कहाँ से होगी. इस बात पे कोई नहीं सोचेगा. सोचेंगे तो ये लैंड कहाँ से आएगा. लैंड इज प्लेंटी, लैंड इज प्रीटी मच एवरीवेयर अराउंड अस. जो नहीं है वो सप्लाई चेन्स नहीं है. सो विल टॉक अबाउट दैट. अच्छा ये बताइए आपको कि वो 5 मिलियन का वादा किया था गवर्नमेंट ने, 5 मिलियन होम्स बनाएंगे. 10 मिलियन. कितने प्लम्बर हैं जी इस्लामाबाद में? आपको, आप लोग यहीं रहते हैं, किसी को मालूम है इस्लामाबाद में प्लम्बर कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन कितने हैं? 5 मिलियन घर बनाने आपने. मैं और आप तो बनाएंगे नहीं, मुझे तो ईंट भी सीधी नहीं लगती. ठीक है, गिलकार, मिस्त्री, राज मजदूर, क्रेन्स, डंप ट्रक्स, ये जरा कैलकुलेशन कीजिएगा कभी.
Challenges. The challenges that I will explain, essentially I'm not explaining things that I believe are new to you. I'm simply providing them as a background to you because I believe everything is known to you, everything is exposed to you. It's just I may have a slightly different context, but I am not assuming that the reason I'm presenting here is that I'm under the assumption that you're not aware of it. That kind of thing is not there. पहली चीज़ है, there's no standard definition of urban in Pakistan, right? You are much younger than I am, but when Qaid-e-Azam University was established here, this was rural, all of it. Forget about Barako. अब तो बहरिया टाउन जो है वो इस्लामाबाद को घेरे में लेने के चक्कर में, everything is becoming urban. What is the definition of urban? Is it a metric of population density? Is there spatial clustering of residential or other land uses that define a place as urban or rural? Is this the contiguity of the space that it has to be clustered or contiguous to another urban areas and then putting together all of them would make it urban? Which one of it is it? And then there's a controversy about urban demographics. लाहौर जो है वो 12 मिलियन का हो गया, कराची कहता है जी हम तो 40 मिलियन के हो गए. कहते हैं लाहौर की पॉपुलेशन आपने इन्फ्लेट कर दी, कराची की डिफ्लेट कर दी. So we don't even have a consensus on what is the size of the population, right? So these are real things. And then there's this abundance of urban sprawl that is happening in Pakistan. And so I spent my good last 25-30 years looking at urban issues, and urban sprawl was one of them. And I'd read pretty much every definition of urban sprawl. But I can tell you the one that resonates the most with me is the one by Patras Bukhari. Patras Bukhari मरहूम जो थे वो बड़े कमाल के रेडियो के डायरेक्टर थे पेशावर में, और लिखाड़ी बहुत आला. एन मुमकिन है कि आपने ना उनको पढ़ा हो, तो उस नज़रिए से मैं उनका एक पैराग्राफ आपके लिए लाया हूँ. उनका एक मजमून है लाहौर का जुग्राफिया. उसमें वो लिखते हैं, और सुनिए, लाहौर के जुग्राफिया के हदूद अरबे, पेरिमीटर ऑफ लाहौर. वो कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था. देयर वाज अ पेरिमीटर दैट डिफाइंड लाहौर. लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने उसको मनसूख कर दिया है. अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर है. ये वो 50 की दिहाई में लिख रहे हैं. अब लाहौर के, दिस इज योर नेटिव टाउन है, अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर है, लाहौर ही वाक़ है, और रोज वाक़तर हो रहा है. DHA पे DHA, DHA पे DHA, ये बता रहे हैं वो आपको, DHA से पहले बता गए. अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ है और रोज बरोज वाक़तर हो रहा है. माहिरीन का अंदाजा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा कि जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा. And now the definition for urban sprawl. यूं समझिए कि लाहौर एक जिस्म है, जिस्म के हर हिस्से पर वर्म नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वर्म मवादे फासिद से भरा है. गोया ये तौसी एक आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहक है. That is urban sprawl. कमाल देखिए हैं. पत्रस बुखारी मरहूम लिख रहे हैं 50 की दिहाई में लाहौर का जुगराफिया. अब जाके देखिए, अब आपको बहरिया टाउन DHA पे DHA नजर आएगा. Then you realize what is happening, right? The land being controlled by these mafias that build only for the upper middle classes and others. The rest of Pakistan is just waiting for their turn. तो अब सवाल ये कि कितने परसेंट अर्बन हो गए. कहते हैं जी 75% of Pakistan is urban or urbanizing. वो कुछ work, there's reports from Harvard University that say that 40% of Punjab's population is urban, and an additional 33.2% is urbanizing. 40% of Sindh is urban, and another 20% is urbanizing. So what is urban then? They say the gross density of 500 persons per square kilometers and a population size of 100,000, and the urbanizing density of 250 persons per square kilometers. निहायत ही अहमकाना बातें, कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको बयान करने का. वजह क्या है? रियलिटी देखिए. I had some data from census, so I could do some urban detailed spatial analytics. Ravi town में population density है 25,000 person per square kilometers urban, और वागा टाउन में 1100. जमीन आसमान का फर्क है ना. There's an order of magnitude difference between the density in Waga town and the density in Ravi town, but both are urban. कैसे मुमकिन है? एक तीतर एक बटेर, right?
So there is a fundamental lack of understanding and the metrics are very poor. ठीक है. फिर मेरे मोहसिन हैं क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा के former director of urban planning, School of Urban Planning, who had a very long association with PIDE. He has retired since then, Professor Muhammad Qadir. And Qadir Saab has been talking about the ruralopolises in Pakistan. So forget about metropolis. वो जो गांव है ना, वो जो शहर बन रहे हैं, क्या है तो शादरा था भी गांव, हर घर में माइक्रोवेव भी है. जहां माइक्रोवेव और इस्त्री आ गई वो फिर कहां गांव रहा. ठीक है. Right? So ruralopolis, the considered to be rural given the lack of density, but then the outlook is very urban. Right? अब आते हैं मुश्किल वक्त. देखिए ये जो सबसे ऊपर आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है ना, यहां देखिए, अगर ये चाहिए तो मेरा माउस यही आ गया. दिस इज पाकिस्तान ना. मैंने चुनकर शायद मुल्क ढूंढे. मैंने कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुनिया, बांग्लादेश और ईरान. देखिए इस मुल्क का मसला यह है कि ये दो जगहों का मुकल्लिद है. आधा मुल्क सऊदिया का मुकल्लिद है, बाकी ईरान का मुकल्लिद है. ठीक है. और फिर अपने जैसों को ढूंढे तो हम जैसा सिर्फ एक ही मुल्क है, वो बांग्लादेश है ना. हम ही थे ना, बांग्लादेश हमसे मुख्तलिफ थोड़ी था, एक ही था. तो अब जरा कंपैरिजन कीजिए. यहां आपको मौलवी हजरात कहते हैं कि ये ज़ब्त तौलीद जो है ये कहीं जो है वो मुतसादिम है हमारे अकायद से. तो अब देखिए जिनकी तकलीद में है, आप सऊदी अरब को देख लीजिए और ईरान को देख लीजिए. वहां फर्टिलिटी रेट्स आपसे कहीं ज्यादा गिर गए. आपसे ऊपर थे पहले, अब नीचे आ गए. वो तो संभल गए. ठीक है ना. जिनकी तकलीद में है आप, वो संभल चुके हैं. और जिनको आप कहते थे भूखे नंगे बंगाली, उनको देखिए कि उनकी अक्लमंदी, उनकी समझबूझ, उनका मसाइल को समझना और उनका हल ढूंढना, वो भी सबसे आगे. ईरान को देखिए साहब. ईरान हैज लोअर फर्टिलिटी रेट्स देन कैनेडा. सो द क्वेश्चन इज, जब साल हर साल आपकी आबादी बढ़ती है, जमीन भी उतनी है, दरियाओं का पानी कम हो रहा है, हवा जो है वो आलूदा हो रही है. So how is it possible that you continue to reproduce at such a rate and you have a faltering economic engine and your natural resources other than the barren land that you have, और यहाँ तो सारा बारानी है, बारिश ना हो तो मसला खड़ा हो जाता. what would you do? Right? और जिनकी तकलीद में आके आप नहीं मान रहे लोगों की बात, उनका आउटलुक तो बहुत डिफरेंट है. So make a decision. Right. Don't let government come up with a policy. ये पॉलिसी तो आपके हाथ में है. कुछ चीजें तो जिम्मेदारी कबूल करें ना हम एज ए सोसाइटी. ये तो हमारे हाथ में. अब ये भी ना कर पाए तो फिर क्या करेंगे. अच्छा, फिर वो there's high fertility rates, that's a problem. Then we have an accidental city. Our cities are accidental cities. वजह natural disasters. We are extremely vulnerable to natural disasters. तकरीबन हर गवर्नमेंट के टेन्योर में एक सैलाब आता है. ठीक है. भुट्टो साहब के टेन्योर में 2 सैलाब ना आए होते तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं. राइट. 2 floods, not 1 flood. भुट्टो had to contend with. राइट. यहां पर भी जो बड़ा सैलाब आया, 1/3 of Pakistan was under water. So we had internally displaced people. Then we have militancy. ठीक है. Then we have the internally displaced people from the FATA area. फिर काउंटर इंसर्जेंसी में हमने उससे ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया. उससे पहले 3.8 million refugees just showed up on our border one day in 1977. Right? मैं जहां से ताल्लुक रखता हूं, पेशावर से, अंदर शहर पेशावर से, मेरी जुबान हिंद को और फारसी बोलने वाले अब खत्म हो गए. वो घराने के जो वहां के रिहायशी थे, we have all been displaced by internally displaced people. जिन लोगों ने पेशावर को नाम दिया वो तो है ही नहीं वहां पर. I'm not complaining, मतलब हरगिज नहीं. Everybody is welcome. जितने लोग आए वो खुशामदीद हैं, ऐसे ही बात नहीं है. दिल को तंग करने से कौमें नहीं बनती, दिल को बड़ा करने से कौमें बनती. कहने का मकसद ये है कि if you're not planning for it, then how would you deliver? अगर 8 लाख के शहर पेशावर में 2 million अफगान आ जाएंगे and you have not planned for it, you will make their life difficult as we did, and you will make your own life difficult as we did. So what you really need is the ability to see this and to realize कि पाकिस्तान के urban demographics stationary नहीं है और vulnerable हैं ये natural disasters को.
जहां आपने 8 लाख लोगों को पानी देना था 12 लाख को देना, कैसे आया? इतनी तो पाइप की कैपेसिटी नहीं है ना। जो मेन हम जिसको वाटर मेन्स कहते हैं उनमें तो उतना ही पानी दौड़ेगा अगर है भी, तो वो तो है भी नहीं। बट इफ इट वर देयर यू वुडंट बी एबल टू गिव water to 1.22 million people if the system was designed for 800,000. So how do you plan for these accidental cities जिनकी influx इतनी ऊपर नीचे होती है? And then जो economic fortunes हैं वो forefront पे ही नहीं है. There is no minister. Is there a minister for urban economic development? अगर हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा रेलवे का भी मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है? बेहतर है ना. कभी आपने सुना? दिस इज अमेजिंग. मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आपकी माजरत के साथ, कनाडा में जो मिनिस्टर्स हैं ना, या अमेरिका में कोई रेलवे का मिनिस्टर हो, मजाल है जो वो रेलवे के अलावा कोई दूसरी बात कर जाए. यहां जो रेलवे का मिनिस्टर है, मजाल है जो रेलवे के कोई बात भी कर जाए. और मजाल है कोई एंकर को ख्याल हो कि मैं पूछ लूं आपसे कि जनाब पाकिस्तान में 550 बोगियां थी बेनजीर की हिलाकत से 1 दिन पहले, अब कितनी है? कितनी फ्रेट ट्रेन थी, अब कितनी है? कितने लोकोमोटिव थे? ऑपरेशनल कितनी है? सस्पेंडेड कितनी है? डिस्कार्डेड कितनी है? कोई तो पूछे नहीं यार. कितनी दफा आप लाहौर पिंडी 1800 करके डाइवू पे जाएंगे? तो 500 का टिकट होना चाहिए रेल पे. द इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्क वंडरफुली विद रेल सिस्टम्स, राइट? If you come and take my transport planning course, I will show you it's the fundamentals of transport economics, and where economies of scale exist, bring the cost down so much. नहीं होगा तो फिर दें 1800, 12,000 का टिकट जहाज का है. Okay, now in the past the state has exclusively focused on agriculture because there's agriculture का जो GDP का शेयर है वो तो कम होता रहा. कहीं 50% होगा पहले, अब तो GDP को कंट्रीब्यूट करता है गालिबन 20 से भी कम. लेकिन लेबर फोर्स जो है उतनी है, 50-60% अभी भी इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेबर के साथ, उसके साथ एग्रीकल्चर के साथ, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग. एंड नाउ द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर अर्बन सिस्टम्स इज रिलाई ऑन रेमिटेंसेस. मुर्तजा को फोन करो कि वहां से पैसे भेजे. रेमिटेंसेस, यहाँ से पाइड में भी बड़े पेपर छपे होंगे रेमिटेंसेस पे. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट? बिकॉज दीज आर द इजी थिंग्स, द गवर्नमेंट्स फॉल फॉर इट. क्या आपका एजेंडा रेमिटेंसेस बाहर से देंगे? लोग कहते हैं मैं जब तब्दीली आएगी तो अरबों डॉलर आएंगे बाहर से. Let me tell you, I live in abroad. मेरे टैक्स देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता पाकिस्तान भेजने को, और मुझ जैसे जो पाकिस्तानी. You have to be realized this. We are taxed at 50-52%. An ordinary person living in an apartment pays $3,000 in property tax. Right? These are the real expenses of your loved ones who live abroad in America and in Canada and England. They don't have the means कि आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो $17 बिलियन रेमिटेंसेस में आते हैं, बहुत बड़ा मुआवजा है. और असल में जो कंट्रीब्यूशन है वो है जो आपका पढ़ा लिखा भी नहीं है मजदूर, जो मिडिल ईस्ट से आपको पैसे भेजता है, जिसकी मेहनत और जिसकी हार्ड वर्क पे हम लोग इस मुल्क को चला रहे हैं. यू नो, द रियल प्राइड ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ प्रोफेसर इन कैनेडा, इट्स द लेबरर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी लेबर इन द मिडिल ईस्ट. 17 बिलियन में से तो 2 बिलियन नहीं आते कनाडा से, राइट? So how do you focus on this? How do you change the thinking? You have urban systems, buildings भी हैं, universities भी हैं, सड़कें भी बन गई हैं. Now how do you make urban economic growth agenda focus? Discussion तो शुरू होना कहीं से. What policies should we adopt? Forget about the policies. Let's start with the discussion that we have to create a greater share of gross domestic product coming out of the cities. We have to let the commerce take place. तिजारत कुछ तो करें ना. मैं अभी नदीप साहब से बात कर रहा था. The day 9/11 happened, President Bush had a speech. In his speech, he said something very interesting, which people didn't realize. उन्होंने कहा डर के मत बैठना, जाओ जाके आज रेस्टोरेंट में खाना खाओ. घर में बैठना जाके आज फिल्म देखो. 3,000-3,500 लोग न्यूयॉर्क में मर गए, ये क्या कह रहा है? डर के मत बैठना, जाओ जाके खाना खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, घर भी ना खाओ. जाके प्ले देखो उधर ब्रॉडवे पे, $150 का टिकट है, जाओ खरीदो देखो. वजह, द सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इकोनॉमी. यहाँ घर में बैठ के सेविंग्स पे बैठ गए तो इकोनॉमी गिर जाती है, जिसको आप ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं. जब फ्लो ऑफ मनी स्टॉप्ड, द फ्लो ऑफ मनी स्टॉप, सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप्स, देन ऑल ट्रबल स्टार्ट. सो हाउ डू वी मेक अर्बन सिस्टम्स more fluent or more fluid in the flow of money? And how do we develop the cities to their true potential? And is it possible that we can have a future of Pakistan where we have entrepreneurship at a level that we can say and imagine that cities will be able to generate, not carry their own weight, so they are off the subsidy, but they are able to take care of the rest? The challenge is,
It's very difficult to do commerce in Pakistan. Doing business in Pakistan is very difficult. Now, out of a rank of 190 countries, Pakistan is ranked at 108. This is by the World Bank, the Doing Business Indicators. अब देखिए, आप घर बनाने जाते हैं ना, so registering a property, Pakistan is ranked 151 out of 190. 150 मुल्कों में प्रॉपर्टी रजिस्टर करना आसान है हमसे. अभी आप 50 लाख घर बनाने का सोच रहे हैं, यहाँ तो रजिस्ट्री नहीं होती. ठीक है. Protecting, paying taxes, we are ranked 161 out of 190. यहाँ पे करना, जो पे करना चाहते हैं, even that process is cumbersome. Right? So with these metrics, how would one expect entrepreneurship to take place? I have a firm, I told you I started with it, I have a firm called Regionomics. You know how long it took me to register it? 5 minutes. Went online, searched for the name Regionomics. No one had used that name. They thought I was looking for Regonomics. No, Regionomics. I registered it, and that's it. At the end of the day, the state sent me all the paperwork, and there was no paperwork, just one page. I got allotted a tax number, and that's the end of it. 10 मिनट में मेरी फर्म बन गई. अब मैं चाहे उसे 3 मिलियन का कारोबार करूं या 300 मिलियन का या 3 बिलियन का, doesn't matter. I have a firm. आप जरा कराइए रजिस्टर कुछ. Okay. So, then there's this, being an engineer, I have the benefit of not being wooed or not being vulnerable to big theories. सिविल इंजीनियर जो होता है ना, जो इंजीनियर होता है, वो नंबर्स को देखता है जो आपके सामने है और क्या वो माने रखते हैं. राइट. हमें हमारे यहाँ थ्योरी, यू नो, वी डोंट फॉलो मिल्टन फ्रीडमैन, कि फ्रीडमैन बड़ा इकोनॉमिस्ट था, ये गैरी बेकर था. वी डोंट केयर. नंबर्स हैं तो हम बिल्डिंग बनाएंगे, अगर सॉइल की कंडीशन नहीं है तो हम उस पर कुछ नहीं खड़ा करेंगे. राइट. वी गो बाय नंबर्स. नाउ हियर इज माय बीफ विद इकोनॉमिक्स एज अ प्रोफेशन. Pakistan's stated unemployment rate right now is 5.8%. So is Canada's. ये कैसे मुमकिन है कि दो इक्तिसादी निज़ाम के जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8%, कैनेडा में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ये आपके सामने. और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ बिगर menace, the way I see it. Right? So if your unemployment rate is 5.8%, as is the case with Canada, how come 38% of children in Pakistan today have stunted growth because of a lack of caloric intake, enough sufficient caloric intake? लोग इतना नहीं कमा रहे कि अपने बच्चों को इतनी खुराक दे सके कि उनकी हाइट और सेहत उतनी हो जितनी कि बाकी दुनिया में उनकी उस उम्र के बच्चों की है. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टंटेड ग्रोथ. आप कहते हैं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8% पे, कौन यकीन करेगा दुनिया में? आप क्यों यकीन करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके बच्चों के कद आपके कद से छोटे. राइट. जब आपके बच्चों के कद आपसे छोटे हैं तो जान लीजिए कि उनकी कैलोरिक इंटेक आप नहीं पूरी कर सके. आपसे बुराद आप लोग नहीं, बट बल्क ऑफ पीपल हु आर इन अर्बन रूरल पाकिस्तान, they're facing that. उनके skeletal structures change हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने. We don't care. Unemployment rate is 5.8%. साहब, unemployment rate is not 5.8% in Canada even. आपकी तो labor force participation rate ही इतना कम है. Unemployment rate is for those people who are looking for job. यहाँ तो खवातीन तो है ही नहीं. You know, the labor force does not include that many women in Pakistan, and from that number you calculate the unemployment rate. The prevalence of stunted growth in Sindh is 50%. ये दिल दहलाने वाली बातें हैं, दिल दहलाने वाली. You should, like, if anybody is thinking, oh, I'm working on FDI, forget about FDI. आपके मुल्क के बच्चे अपनी हाइट पे नहीं आ रहे, इससे बढ़ के प्रायोरिटी क्या होगी? Then the unemployment rate for the youth is 1.98%. This is the stated statistics from Federal Bureau of Statistics right now. The unemployment rate for population between the ages of 35 and 39 is 98% is gainfully employed. Do you believe in it? But thoda bahut to ho na. So anyhow, so I'm not going to belabor on this, but you get the picture. Then the challenge with education. I think we have overeducated our urban middle classes. When I was a student here, there were 5 engineering universities: UT, Lahore, Peshawar, NED, and 1 or 2 Khairpur में कहीं होगी. अब हर घर में खुली हुई है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हर जगह PhDs हो रही हैं. बल्कि आज तो मैंने देखा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जंग अखबार में इश्तिहार, नदीफ, दिस इज हॉरिबल. देयर इज एन एड इन द न्यूज़पेपर जंग टुडे व्हिच आई जस्ट सॉ दिस मॉर्निंग दैट देयर इज एन एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द ओनर्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड दे आर कंप्लेनिंग दैट देयर आर पॉलिसीज दैट आर अगेंस्ट रिसर्च इन पाकिस्तान. फॉर इंस्टेंस, प्रोफेसर्स हु वर गेटिंग 40% tax rebate because they were professors, now they're going to get 25% tax rebate, and this is a research killing move.
La hawla wa la quwwata. So you see the mafias that have penetrated in every aspect of this country. है ना? कभी सुना किसी मुल्क में प्रोफेसर्स खड़े हो गए कि हमें टैक्स कम दी, हम पर कम टैक्स लागू हो नहीं तो रिसर्च मुतासिर होगी? कनाडा में तो नहीं, मेरा टैक्स रेट 50% है, आधी जो तनख्वाह मेरे घर तक आती नहीं और मैं खुश होता हूँ. वजह क्या कि देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माय नेबर, and that social contract is that if my children are fed, I should give enough money from my own pocket so that my neighbor's children are fed. Crowdsourcing से डैम नहीं बनते जो अहमक हमें बताते थे. The crowdsourcing is one thing, and that's your tax. The biggest element of crowdsourcing is we collectively paying tax, the way I do it in Canada, the way others do in other parts of the world, right? In the absence of that, you have a big problem. चकवाल में 2016 में नौकरियां निकली, किस स्केल की? क्लास 4 की, चपड़ासी, माली. 2000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया, 9000 lined up. I'm not exaggerating, these are actual statistics. 2000 university graduates applied to be a चपड़ासी और a माली in चकवाल. पढ़ा दिया बच्चों को, मास्टर्स करवा दिए. हर बच्चा, मैं कल खेड़ा गया हुआ था, वहां सबने फिजिक्स में एमएससी की हुई है. वो करोगे क्या फिजिक्स में एमएससी करके? Right? How many physics MSCs Pakistan needs? MPhils, PhDs in physics. We have educated, and then those who are educated are not skilled enough. There's a mismatch between skills you need to grow an urban economy. Degree लेना तो नहीं है ना, degree से तो तालीम नहीं होती, degree तो certification है. Are you skilled enough to be productive in an urban economic system? And the answer perhaps may not be yes. And then there are supply side failures कि लोगों के पास पैसे हैं और दे नहीं सकते. ये देखिए, water 2000 का टैंकर आता है. You need 4 to 6 tankers for a family of 7 or more. So the average spending on water alone in Rawalpindi cantonment today is between 8 and 12,000 rupees per month. And the cantonment board charges 1,000 rupees per month, delivers about 100 liters of water every other day. And look at the mismatch. People are paying, when you know people are paying 10,000 rupees, and you know how the economies of scale work in water supply. You have the water supply system in place. हर घर में पाइप्स हैं, हर घर में वो आपके ओवरहेड टैंक्स हैं. यू जस्ट गो टू द पीपल एंड से यू पेइंग, आप 10,000 रुपये दे रही हैं, अगर कल से 5,000 दें तो हम आपको कंट्रोलमेंट बोर्ड आपको पानी सप्लाई करेगा. दैट्स अ सप्लाई साइड फेलियर. व्हेन यू नो देयर इज अ विलिंगनेस टू पे एंड यू स्टिल फेल टू कैप्चर इट, दैट्स अ सप्लाई साइड फेलियर. लुक एट ट्रांसपोर्टेशन. देयर इज नो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. 2 मेट्रो से पूरा गुजारा नहीं होता. There's no country, no city in the world that has just one line here and another line there, and there's no feeder system. दुनिया में जहाँ सबवे सिस्टम बनते हैं या बस रैपिड ट्रांजिट, there's a whole network of bus routes that support the main arterial, the main bus route or the main subway route. In the absence of that, you will have an under subscribed system. Right? वो है ही नहीं. And when the state came up with a bus rapid transit system, which is the franchise system, which would have worked, the Supreme Court of Pakistan intervened under Justice Chaudhry, Iftikhar Chaudhry, and killed that system, saying that denying people the right to operate substandard paratransit is denying them the opportunity to earn a living, and they should be allowed to ply these wagons and chinchis and not be replaced by proper buses. साहब, तो फिर ये जो पोड़ियों वाला पुल है रावलपिंडी में, सदर में, कि जहां वो लोग बैठ के दांत निकालते और आपके कान साफ करते, उनको भी तो मेडिकल डिग्री के साथ बिठा देना. फिर वो क्यों नहीं? जब कोई भी आदमी टूटी हुई बस चला सकता है या वैगन चला सकता है, राइट? बिकॉज इट्स, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट, यू आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द राइट टू अर्न अ लिविंग. तो व्हाई डू वी गो आफ्टर द क्वैक्स, राइट? So these overzealous courts are killing the overzealous, not just the Supreme Court, but the whole NAB infrastructure. This is killing commerce in Pakistan. Right? This is destroying commerce in Pakistan. कोई कुछ करने को तैयार नहीं है. So what is happening now? You have transport network companies, Uber, Careem, and these others. Instead of now enabling them, I understand now that they are being pushed out of the system. उनके लिए मसाइल खड़े कर, एक नई वो ड्रॉप सर्विस भी शुरू हुई है. So the state first fails to do its own job, and then someone else does it. Then it tries to say, well, let's find a way to stop them. And on top of it, ये Uber Careem आपके और मेरे लिए हैं. The bulk of Pakistan's lower middle class cannot afford it. You still need a subsidized urban transit system in Pakistan.
in urban Pakistan. That has to be happened. कहीं भी Canada में Toronto में जहाँ मैं रहता हूँ, right? The average household income is about $85,000-$90,000 a year. Our Toronto Transit Commission has a budget of about $1.5 billion, right? And they still recover only 70 cents on a dollar from the fare box revenue. The rest, 30 cents on a dollar, still come from subsidy from the government in a very affluent city in the world. In New York, the fare box revenue covers only 50 cents on a dollar. So subsidy to New York में भी है, but it has to be distributed in a more thoughtful manner. अगर आप घर नहीं बनाएंगे तो ये situation होगी, crowding, overcrowding, and that's not the way to go. I know that PIDE has produced very good publications. I rely on them all the time on housing and urban challenges, especially on the housing deficit. And there are people who have been working on it for many years. And many times when I write, I actually use PIDE's work. So it's not new to this crowd to know that there's a deficit. You can say, well, it's not 5 million or 7 million homes, it's 2 million homes. Millions में deficit है, crowding बहुत है, एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग हैं. So you have to increase the supply side on. But the challenge is, land supply is in the hands of privileged classes, even middle class. You have DHAs, right? Defense ने काबू किया हुआ है काफी सारे, DHAs ने काबू किया हुआ है. I think they come under the Army Land Directorate. Then you have Bahariya towns. ठीक है. Then you have journalist society, the lawyer society. Land is only being made available for development for those who already have monopolized resources in Pakistan. जिसको चाहिए, जिसके पास कोई resources नहीं, collateral नहीं है, उसके लिए कोई land scheme नहीं है. Right? And that's a problem. Then they will figure it out. Remember always that there will never be a case where cities will exist without slums. Slums may exist without cities, but cities will never exist without slums, especially when you have these social inequities built into them by default. So you need to have an industrial way of looking at housing supply. And the challenges, I'm going to go through these slides very quickly, that you know that अभी तक record जो है वो लठों पे, लठा, पटवारी, गर्दावर्स. Did you hear that Murtaza Hassan once spoke about it in the parliament, saying कि पप्पू पटवारी की approval के बगैर इस्लामाबाद में registry नहीं होती. सुनी थी वो तकरीर आपने? पप्पू पटवारी मेरा class fellow है. Chaudhry Asad and I studied from grade 1 to 10 together. Anyhow, he's a Gardawar Patwari nahi hai. But he's probably doing better now. Oh, he's doing much better. He's a good friend. We've been friends since we were 5 years old. मगर registry मैंने आज तक नहीं करवाई उससे, क्योंकि I don't have any property in my name here. So things are happening. Nadra is doing great work, and honestly, I believe in it, that Nadra is trying to get things out of latha and into paper, and that's a good thing. Master plans are either dated or very poorly designed, where we have single land use, single purpose land use. ये घर यहाँ होंगे, दुकान, ये Islamabad is a good example of it, right? You created a house or a center of government, and then didn't provide housing for all the thousands, tens of thousands of people who are supposed to work in these offices, है ना? बाब सरकारी अफसर तो अगर 10% होते हैं ना, 90% जो है वो तो स्टाफ होता है. So उनकी हाउसिंग कहाँ है? उसका कोई नहीं, ये बंगले बना दो. Anyhow, so challenges हो गए. अब किया क्या जाए? Think outside the box. Think outside the factory box. ये manufacturing and agriculture, they will not give you value-added GDP. It has not, this model is not working elsewhere either. अगर तो आपके पास abundance of water है ना, abundance of water, then you can rely on agriculture. But if you're a water-poor country, then you start thinking about how much of GDP can be sustained by agriculture. If you have trained workforce that is able to produce bulk of manufacturing, then yes. But then with automation coming your way down the road, which will be very cheap automation, काफी manufacturing आपके हाथ से निकल जाएगी. Robots are much more productive than human beings, but most importantly, robots never ask for a raise, and they also don't pay taxes. So the corporation's contribution to taxes of the labor goes down to zero because of robots. Right? So all of this is happening. Manufacturing पे rely करना बड़ा खतरनाक काम. But you know what is happening? Machine learning, data science, big data, artificial intelligence, all of these things are happening around you. You can train a global workforce. ज़रूरी है कि यहाँ से आप ईंटें लगाने वाले सऊदीया भेजें,
Why not you train data scientists who go out and work in the rest of the world? You train them here to the highest standards. You can create an alternate economy in your urban centers if you want to. In governance, put job creation at the centerpiece. The government should say that our role is to create jobs, and here's the job report. Release it every month so that people and they themselves would know. Right? That wouldn't happen if you continue to go the same way as you've gone through so many years. Streamline service delivery. There's so many agencies that you have to rely on for service delivery. Lahore में एक ही काम 7 agencies करती हैं. लाहौर में अगर आप म्यूनिसिपल सर्विस के मैप देखें, they overlap. ये नहीं पता चलता कि यहाँ पानी इसने देना है या उसने देना है. And you continue to go around different offices trying to figure out कि मुझे वासा ने देना है या cantonment board ने देना है. Overlapping jurisdictions. We don't empower local governments. We make tall claims about it. In North America, in Europe, the regular citizen probably never come into face-to-face with their with their provincial or national assembly representative. लोग अपने नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को अमेरिका में नहीं जानते, कनाडा में नहीं जानते. जानते हैं तो म्यूनिसिपल काउंसलर को, क्योंकि उनकी तमाम तर ज़रूरियात का जो तदारुक होता है वो म्यूनिसिपल दफ्तरों में होता है. पानी, स्कूल, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, ट्रैफिक, ऑल ऑफ इट इज़ म्यूनिसिपल. मुझे याद है वली खान ने एक मरतबे कहा 20-25 साल पहले, मुझसे नलका लगवाने मेरे घर मत आओ. माई जॉब इज़ टू क्रिएट रेगुलर टू लेजिस्लेट. लोग आ जाते हैं, नलका लगा दें. दैट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम. और ये कंटोनमेंट बोर्ड क्यों है शहरों में? व्हाई डोंट वी एलिमिनेट देम? इतनी बड़ी अर्बन सप्लाई जो है लैंड की, दिस इज अंडर द कॉल्ड कंटोनमेंट बोर्ड. पानी आप नहीं प्रोवाइड कर सक रहे, सॉलिड वेस्ट आप नहीं उठा रहे. अभी भी अगर आप जाएं, कल रात में जब आया लाहौर से, तो एयरपोर्ट का रास्ता जो था वो चकलाला की तरफ दिया हुआ है. बड़े बड़े डायरेक्शंस टू एयरपोर्ट इन कंटोनमेंट बोर्ड स्टिल पॉइंट टुवर्ड चकलाला. आप तो डायरेक्शंस भी नहीं बोर्ड के बदल रहे, let alone delivering everything else. It's not that the corporations are doing better, equally poor. But the thing is, the urban land is contiguous. Unless there is a defense-related use for land, if the land has already been commercialized as residential, commercial, and others, then let's get rid of cantonment boards so that we can actually unify our cities and start planning them with more coherence. There's absolutely no need. The cantonments were established by the British for a reason. वो आपने में और आप में फर्क रखना चाहते थे और दूरियां रखना चाहते थे. So they maintained the cantonments. Now, like I've lived in a cantonment all my life in Pakistan when I was here. I don't see any defense-related use in the areas. All are residential, commercial. सदर जो है, आप रावलपिंडी सदर जाते हैं, वो cantonment है. क्यों? Then you need cultural change. Like the government shouldn't come to you and say बच्चे कम पैदा कीजिए. मतलब ये काम तो आपकी दस्तरस में है. Right? So you really need to enable some changes at your end, right? Encourage entrepreneurship among the youth. My former president of my university actually once said to the government, said, why do you ask how many people got jobs within 6 months of their graduation? कहते ये क्यों मुझसे पूछे? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि 6 महीने ग्रेजुएशन के बाद कितने लोगों ने कितनी बिजनेसेस को शुरू किया? You should ask me how many students graduating from Ryerson University were able to start their own business within 6 months. There should be a focus on entrepreneurship rather than a focus on getting jobs. Right? That's the way to rethink. When people who are controlling, running the governments, they should start thinking about entrepreneurship, because without commerce there's nothing. And then let the community come up with solutions. One of my heroes in Pakistan is Nazir Wattu, who is from Dudhiwala in Faisalabad. And in fact, when we held the World Urban Forum in Vancouver, I brought Nazir Ahmed Wattu to Vancouver, where he spoke about the water supply and sanitation system he had set up in Dudhiwala in Faisalabad. And from there he started the Changa Pani program, Union Council 56 in around Lahore and elsewhere, where people themselves, after getting engineered drawings from the government and from other NGOs, were able to build their own infrastructure. फैसलाबाद में, दुधीवाला में पानी और सैनिटेशन की स्कीम सेटल्ड एरिया से बेहतर है, जाके दिखाइए. कम्युनिटी ड्रिवन. यू हैव टू ट्रस्ट आवर ओन पीपल. अपने लोगों पे एतबार करना सीखना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता. और ये जो हम 50 लाख घर बना रहे हैं, since 2000 Pakistan has added 50 million more to population, right? Number of cities added 0. You have to build more cities. Take the example of Shenzhen in China. Population in 1979, 30,000. Sleeping
Sleeping fishing village, Shenzhen, 1979 demographics, 30,000. They created the first special economic zones in Shenzhen. Population in 2015, 10 million. The regional population, 18 million. We have but Lahore se jab aaye na motorway pe, dekhe kitna land hai. We can take 20, 30 square kilometers and start building new cities. We can have innovation cities. We can have technology focused cities. We can have entrepreneur focused. We can have health focused cities. There's no lack of creativity, but we have to enable it. For housing supply, you have to realize that you need a structure for it. यहाँ पर कनाडा में जब घर बिकता है या बाहर तो मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस पे लिस्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि घर जो है बिका 2 करोड़ का रजिस्ट्री करा ली 60 लाख की. No, this doesn't happen, right? And you and I are part of the problem. कि जब हम टैक्स चोरी करते हैं ये सब कि 2 करोड़ का घर बेचा 60 लाख की रजिस्ट्री करा ली. वहाँ मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस है. अगर आपने घर बेचना है, आपने लिस्ट करना है, जितने पे होगा वो रजिस्टर होगा, वही प्राइस जाएगी सरकार के पास भी. एवरीबडी वुड पे टैक्सेस, शेक हैंड्स एंड लीव, राइट? Brokerages, every broker is a licensed practitioner. If they do something hanky-panky, they are actually prosecuted not by the government, but by the self-governing organizations. Right? यहाँ कितना property fraud होता है. लोग वो घर भी बेच जाते हैं जो किसी की मलकियत में नहीं थे. You realize the burden of the litigation burden in Pakistan is mostly property related. मतलब कत्ल बदल तो इतने ज्यादा नहीं होते, अल्लाह का फजल है. यहाँ पे तो इतने कत्ल नहीं होते, मगर हर शख्स ने दूसरे पे मुकदमा किया हुआ है. ये 75/1 मेरा था, 75/2 जो था उनका था, अब ये 75/1 पे काबिज हो गए. और हम लोग कहते हैं 1/2 क्या है. बट दिस इज हाउ द होल रेंट रजिस्ट्रीज आर. यू रियली हैव टू फॉर्मलाइज urban land systems and sales of systems, and then you have to look at the supply side constraints. इतना सरिया, इतनी मट्टी, इतनी चीजें हैं आपके पास. And then the construction industry has to be focused on the trades. ठीक है, मैं कुछ skip करते हुए, just in the interest of time, it's 12:02. I want to take 4 more minutes and then stop. देखिए, in Canada, there's a thing called building permits. When someone applies for construction, a building permit is issued. When the construction starts on that building permit, it's called housing starts. When that construction is completed, it's called housing completions. When someone occupies that completed structure, it's called housing absorption. Right? So the government tracks from building permits to starts to construction, under construction to completions, and to absorption. Right? So Canada builds about 225 to 250,000 homes every year. The United States, before the Great Recession, was building about 2 million homes, new homes every year. Now it's down to about 1.1, 1.2 million homes per year. But there is a supply chain behind it. Because the people who are building, the big builders in the United States who are building 20,000, 40,000 homes, the big builders in Canada who are building 5,000, 8,000 homes every year, they have a staff of 10, 12 people. Everything else is outsourced. How? Because Mattamy Homes, for example, is an umbrella group, and under the umbrella group of Mattamy Homes are plumbers, electricians, drywallers, roofers, you name it, right? And the roofers are working on your project, building 300 homes here, and as soon as those 300 roofs are done, they actually move to the next project because everybody is specialized. यहाँ जो आदमी आप लाते ना उसको मजदूर को, यार प्लम्बिंग आती है, हाँ जी आती है, यार ये बिजली भी मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ जी. शाम में क्या करते हैं जो मैं बच्चों को ले जाता हूँ, स्कूल से लेके आता हूँ, वो भी मैं ड्राइवर भी हूँ. So there is no speciality left. I used to get all my clothes stitched in Pakistan because I couldn't afford it outside. तो मैं जब स्टूडेंट था मैं आके कपड़े यहाँ सिलवाता था. Not anymore. वो अच्छे दर्जी भी चले गए दुबई, अच्छे प्लम्बर भी चले गए दुबई, अच्छे तरखान भी चले गए दुबई. देखिए अपने घरों का हाल, रेस्टोरेंट, होटल्स में जाइए. मैं अभी मार्गला होटल में ठहरा हुआ था. किसी होटल का वॉशरूम सही नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है हर वॉशरूम. चाहे मार्केट में जाए, मैरियट छोड़ के बाकी हर होटल में पानी खड़ा हो रहा है. यू डोंट हैव, ये आपको क्या बता रहा हूँ मैं, आपके पास ट्रेड्स ही नहीं है. ट्रेड्स कहते हैं ये प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, एंड यू वांट टू बिल्ड 5 मिलियन होम्स विदाउट ट्रेड्स. बिल्डर से बात कर लेते हैं आप जाके, जी बना लेंगे, जी बना लेंगे, मसला ही कोई नहीं. मसला है साहब, बहुत बड़ा मसला है. Because when you look at the structured homes in North America and Europe and elsewhere, they are qualified trades. People have been certified, and they have kept improving their certifications as technology changes. Right? I'm working with the real estate industry in Canada.
now changing their building managers from screwdrivers and hammers to iPhones and iPad oriented monitoring of buildings. Humidity kitni hai, vibration kitni hai structure mein, theek hai? Everything is getting high tech, and then they are retraining their existing trades. Meanwhile, we are thinking that we can be able to build all of this. This would require tremendous amount of efforts. theek hai? And then land is scarce. I said we have abundance of land, but then land is scarce. Still it's scarce, especially in urban settings. What will work in Pakistan is what has worked in Paris. This Haussmannized, there was an architect by the name Haussmann. This is the Haussmannized view of Paris. You can fit a lot more people in here. And I'm not saying that it is going to be one bedroom apartments. I understand that people in Pakistan have 5 to 7 persons per household. You can build two bedrooms and a den kind of construction ranging between 2,000 rupees per square foot to 5,000 rupees per square foot. It's doable. The people have done good work on it. And if you think this is too much complicated for Pakistan, look at the one in Montreal. There are 3 families living in these triplexes. One in the ground floor, one in the first floor, one on the second floor. Each floor has 2 or 3 bedrooms, one kitchen, one storage. There's a common storage area somewhere else. You can fit in this structure 3 households. We have a family of average size of 3, right? तो इसमें इसलिए 1 or 2 bedrooms होंगे. आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए. लेकिन लैंड आप कितना इकोनोमाइज करेंगे इसमें, बजाय इसके कि हर आदमी को बंगलों में डालें, हर आदमी को वरांडा दें, right? So if you realize you have land poor in urban areas, then this is the architecture that may work. And then you have to look at technology, right? You have to look at better silica. जब वर्सक डैम बनाया था, हमें पता ही नहीं था सिलिका कौन सी लगानी है. Then we had alkali aggregate reactivity. वो सारा डैम जो है वो तबाह करने लगे थे. Then you have to cut the slabs and everything. So you need to know what kind of silica, what kind of steel, how many cranes do you need, right? इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में cranes की deficiency है. Cranes हैं, operators नहीं है, right? So you really have to think through the supply chain of construction. Otherwise, it would be a very tough task. Briefly, when you have disputes, you should have proper contract drafting procedures, dispute resolution mechanisms. ये जो लड़ाइयाँ होती हैं construction में, रुक जाता है काम. कराची भरा पड़ा है आदि partially. Have you seen Karachi? How many buildings are partially built? 10 साल से खड़ी में है, खत्म झगड़ा हो गया because poorly drafted contracts, resolution नहीं. So you prevent things from going to courts. Courts में मत जाने दे चीज़ों को. Focus on drafting contracts, construction contracts properly, so that you have proper dispute resolution mechanisms, so that you don't end up wasting your resources, wasting land, and then waiting for generations to resolve issues. So I spoke already about this. In construction, if you really think through the system, agar 5 million banane, you need logistic management companies, you need excavators, you also need places where you're going to dump the debris, because 5 million homes construction will create enormous amount of debris. That storage of that debris would be a big issue. You need site managers, you need foundation specialists, you need construction workers specializing in concrete, steel, wood, you need plumbers, you need electricians, you need roofers. For 5 million homes, you need millions of these people. How many person hours or person weeks or person months of employment is needed to construct one home, and then multiply it by 5, and then you get the numbers. And the trades have to be regulated. Not everybody who can have a hammer in his hand should be allowed to use it, right? So you have to make sure that people know. वो कहता है, वो बड़ा मशहूर है, एक इलेक्ट्रिशियन बैठा था, उसने बच्चे को कहा, बेटा छोटा ये नीली तार देना, उसने बच्चे ने पकड़ा दी. कहता कुछ हुआ तो नहीं? कहता नहीं. कहता लाल को ना हाथ लगाना, उसमें करंट है. That was testing it, कि कौन से में करंट है या नहीं. Like, this is how things are so informal here, right? So this is not how you're going to get into the next century. Lastly, very briefly, you need finances. Builders need financing. Subcontractors need financing, right? The builders have to get financing to get land. Then the subcontractor who's building it need financing to pay the trades. The trades need to be paid, so that's why subcontractors. Buyers need financing to go and procure. Everything has to be finance-based. So there has to be a banking sector that should support construction. Banking sector के बगैर construction हो नहीं सकती. 5 million home हो या 10 million home हो या 2 million. You really need a strong banking system that understands construction industry and understand how the financing has to be done and who needs money at what state. So you need to set up these credit markets. So you need regulation, you need structure, you need enforcement, you need certification, you need financing. It is possible. You can actually create an industry of construction in Pakistan and engage millions of young Pakistanis who are unemployed or underemployed
and it can actually mobilize a very large segment of the population, provide shelter. And the demand for housing is, I understand, differentiated. Not everybody needs a 2,000 square foot home. You can still build 350 square feet homes for the very poor. You can move from finance, giving loans, to interest-free loans, to less interest or low interest loans, right? This could all be done, but it has to be done systematically. And it will need more than millions. You will be deficient on the supply chain side and also on the trade side. So this is going to be the end of it. I hope that I have left enough time, at least 20 minutes. मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप लोग कुछ सवाल करें, और अगर इस गुफ्तगू के दौरान मैंने कोई ऐसी बात की हो कि जिससे आपको दुख, और यकीन जानिए मेरा दिल आज़ारी का मकसद नहीं था, but I just wanted to have a candid conversation with you. Thank you, Murtaza. I think it's a very good overview of a lot of issues in Pakistan. And I'm particularly, I think a number of issues came out that we need to think about and talk about, and we need businesses, litigators and businesses, etc. So obviously we'll take your views on the pointers on how to build indicators, how to build data. And I think we need to have a bigger session with you, which we'll have after this. We'll do that. But before I go anywhere, let me just say, yeah, can we meet Apu? Because I think, forgive me for saying so, he's probably a better contact than you. I know. So it's Rana Asadari, he lives in Chakri. So maybe we'll bring him here and ask him to give us a talk, because he's the key man. He's the key man. It's a brilliant Absolutely, we must. Ask Rana Asadari to come here. I will. Please do that. I'll Please take do that. So my two questions before we go ahead to you is very simple. One is, why is it that our land system is so complicated and yet we have no property rights? And why is it that it's so complicated to sell a piece of property or buy a piece of property, right? So many of people that I know, for example, are stuck with properties. Many people want to sell and can't sell it. I know a guy who's come here from father died, etc. He's come all the way from Florida and he's spending 2 years here and still hasn't been able to sell the property. Prime property in Lahore, the best property in Lahore, but he can't sell it because it's so difficult. Secondly, why is it that we can't think of urban systems as a growth system? We seem to think manufacturing urban system is not a growth system. But in fact, even Atif Mia, who's now become a very famous economist from Princeton, says that, hey, don't build houses, it'll lead to a balance payment problem. Even he's weighed in and saying, hey, housing is not going to lead to growth. So how do you react to these? Well, starting with Atif, Atif is a wonderful man and a very kind man. Yeah. मैंने एक दफ़ा उसको फ़ोन किया, वो स्टारबक्स में मेरे लिए वेट करके बैठा रहा जब तक मैं आया नहीं किया. ऐसे अच्छे मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं. Atif's main focus and the reason for his fame is his book, The House of Debt, with Amir Sufi, I think. And the book is focused on the fact that when the household debt reaches some threshold, maybe 150% or something around that, 150%, if people have more indebted than 150% of their gross pre-tax or after-tax income, then that episode is followed by major recessions. The reality is that this applies to places where people have shelter. है ना? ये जो सारे formulas हैं, they are valid, but they are location specific. जब लोग झुग्गियों में हो, अभी जब मैं आया बड़ी इमाम से आया, ये झुग्गियाँ हैं, आपने कभी सोचा कि झुग्गियाँ यहाँ की? You pass by it every day. ठीक है, बच्चे सड़क क्रॉस करके आते हैं, आपके सामने पैसे मांगेंगे. So we have a system failure, very big system failure. And then I think I would be a little careful, not dismissive, but a little careful of bringing theories from very different contexts. That's all I'm going to say about it. देखिए, ये जो ज़मीनें थी ना यहाँ पर कैसे हुआ? मुगलों ने आए, कभी आपने सुना 5,000, 7,000, 10,000? So ये सारे system की there's a political economy of it and there's an anthropology of it. कि आप आए, आपने हमारे साथ काम शुरू किया, चलो जी 5,000, आप ये 5,000 यूनिट्स ऑफ लैंड का, तो आप मालिक हो. So this entitlement to land has been set up in this place for decades, for centuries. अच्छा, अब वो यहाँ आ गया सारा चलते हुए, अब उसकी 5,000 7,000 बहरी अकाउंट की सूरत में होती है, DHA की सूरत में, ये भी 5,000 7,000. कोई आपने स्ट्रॉन्ग एंकर ढूंढ लिया रियासत में, बादशाह तो है नहीं, मगर है जो आपको लैंड को एक्सेस दे दे वही बादशाह. बादशाह किसे कहते हैं?
जिसके हाथ में रिसोर्सेज हों जो एनेबल करते हैं रिसोर्सेज को। अब 5000 7000 BHA बन गया, बैरिया टाउन बन गया, जो इतना बड़ा नहीं बना सकते वो जर्नलिस्ट की कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है, कोई बादशाह होगा जिससे ये सब कुछ हो रहा है। सो दैट इज देन द सिस्टम इज ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। मेरे जब वालिदैन का इंतकाल हुआ 2015 में, तो मुझे कुछ 6-7 मरतबे आना पड़ा अपने भाइयों की मदद को, वरना वो ज़मीन का इंतकाल नहीं होता। अभी तक कुछ बैंक के लॉकर्स खुले नहीं हैं, इसलिए कि वो लफ्ज़ लॉकर तहरीर नहीं था कि ये लॉकर, जब लिखा हुआ है कि ये इनहेरिट कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू माय पेरेंट्स नाउ शुड बी a property of these three who inherit, वो नहीं हो पा रहा। अभी 2015 में मेरे वालिदैन का इंतकाल, अभी 2020 हो गया, अभी भी मैं जाता हूँ अदालतों में बैठता हूँ। So I think we have made our life difficult, made our lives difficult by enacting too much of regulation. ये जो we are over-regulated society, we are over-regulated society। आपको यहाँ पे अगर मैं और आप लैमिनेट का ठेला लगा देंगे, बच्चे लगाते हैं, वी स्टार्ट विद शोइंग योर किड्स हाउ टू सेट अप अ लैमिनेट स्टैंड। वो बच्चा आता है अपना लैमिनेट का स्टैंड गली में लगाता है, लोग आते हैं उसे डॉलर दे के अपना लैमिनेट खरीदते हैं, यू ट्राई टू इनकलकेट हाउ टू डू बिजनेस। यहाँ जो बेचारा बाकी लैमिनेट बेचता है उसकी जहाँ आप निकाल दिया, ये पटवार, ये वो, ये थाना, ये सब हर एक आदमी आकर उससे। सो वी आर ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी एंड वी हैव टू एक्चुअली डिसमेंटल दिस ह्यूमंगस बर्डन ऑफ रेगुलेशन सो दैट कॉमर्स कुड टेक प्लेस। इक़्तिसाद के बगैर कोई मुआशरा, मुआशरे की असास इक़्तिसाद पर है, किसी दूसरी शय पर नहीं। जिन मुआशरों का इक़्तिसाद नहीं वो अपनी मुआशरत खो देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली हमारी जब रिसेंट मीटिंग्स टाउन प्लानर्स वगैरह वो सोचते हैं कि सिटी का नाम है हाउसिंग कॉलोनीज, और जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो कोई गंदे पता नहीं क्या, वहाँ किस किस्म का क्राइम होता है, बस जितना घरों से दूर रखे उतना अच्छा है। उधर रिजल्ट के जब दूध लेना होता है तो गाड़ी पे जाते हैं। वजह क्या होती है कि देखें, ये दिस टाउन प्लानिंग केम आउट ऑफ लंदन, वहाँ प्लेग आया, इंडस्ट्री एंड रेजिडेंसीज वर वेरी क्लोज, ये कुछ 100-200 साल पहले की बात है। वहाँ से नहीं टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, देन दे सेपरेटेड रेजिडेंशियल लैंड यूजेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल लैंड यूजेस। आहिस्ता करते करते वो इंडस्ट्री काफ़ी अलग होगी, बाहर तो होगी, यहाँ भी हो जाएगी। सो व्हाट यू रियली हैव टू लुक एट इट, द मेन focus in urban development in North America and Europe and other places, it's called the new urbanism. And the new urbanism is the old urbanism, whereas you look at the mixed land uses, कि आपने अगर दूध लेना है तो गाड़ी में ना, हर आदमी बच्चा, आपका जो रश आवर के हमने ट्रैफिक मॉनिटरिंग की यहाँ पाकिस्तान में, वो रश आवर तो स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ है। The rush hour in Pakistan is started picking up kids, one person, one child, one car. Why? मैं तो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के जाता हूँ स्कूल उतारने से, तो कोई बच्चे पैदल चलने को तैयार नहीं है मुस्लिम की। एंड इट्स नॉट अस, आई वाज इन चाइना लास्ट ईयर, आई वाज स्टन्ड, साइकिल गाइड हो चाइना, सिवाय बीजिंग यूनिवर्सिटी के मैं 10-15 शहरों में गया, मुझे साइकिल नजर नहीं आती। सो देयर इज, वी हैव टू गो बैक टू, हमें तो मौसम ही साइकिलों वाला मिला, ठीक है ना। मैं इस वक्त कल -28 था टोरंटो में, या -18, उसमें तो साइकिल नहीं चलेगी, लेकिन 26 डिग्री पे we have self-made. I think we have to change our, जो हमारे इख्तियार में बहुत कुछ है। अगर आप रियासत पे इन्हिसार ना करें, कि बच्चे पैदा कम करना, साइकिल पे सफर करना, ये आपके कब्जे कुदरत में है। जिस पे इक़्तिदार है, जिस पे आप मकदूर हो सकते, उस पर तो उतना तो कीजिए। चलिए जी, any questions? जी, मेरे 3 छोटे सवाल हैं। एक तो सर, सिटीज़ पे डेटा का इशू पाकिस्तान में बड़ा सीरियस हो रहा है, तो अभी आपने कहा सिटीज़ पे जो है वो काम नहीं होता पाकिस्तान में, तो इन जनरल हर एक की कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पेशल डेटा को वो थ्रू जो है बड़ी डिफिकल्ट वे से वो ले। एक ये इसका जवाब आपको दे दूँ, मुझे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने 2004 में बुलाया था टू डिजिटाइज द इंटायर सेंसस ऑफ पाकिस्तान, 1998 सेंसस। 1,05,000 तालुका लेवल तक के मैप थे कि जो ए स्पेशल थे, कागजों पे थे, डिजिटल नहीं थे। सो दे सेड build a GIS lab. So I worked with an American firm called Caliper Corporation. I brought the software, I brought the equipment. It was all funded by UNFPA. उसके बाद मैंने उनको ट्रेन किया यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के 40 लोगों को। 2006 में उसकी रिपोर्ट भी गूगल पे आपको मिल जाएगी। जब सब ट्रेन हो गए तो पता चला कोई और महकमा आया और सारा इक्विपमेंट उठा के ले गया और वो डेटा का आपको मिल जाता। दूसरा,
बिग डेटा पे यहाँ पे बहुत नॉइज है, जबकि आपकी बुक में मैं जब देखता हूँ तो यू से कि सिर्फ 3 सक्सेस स्टोरीज हैं, अदरवाइज बिग डेटा हैज़ नो एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन। किसी की भूख नहीं मिटी, किसी मुल्क में गुर्बत कम नहीं हुई बिग डेटा से। तो वो ये यहाँ पे लेकिन एक बहुत बड़ी मिथ है, हर HEC ने बिग डेटा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिया, और तो इस सिलसिले में आपकी ओपिनियन बड़ी ज़रूरी है, ताकि हमारी जो एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जो है वो भी जवाब दे दूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ, सारी ज़िंदगी लिखने के बाद पता चला कि आप जब पेपर लिखते हैं तो बड़ी मुश्किल से कोई 20-25 साइटेशन उसकी ना 50 साल में होती है। एक पेपर मैंने लिखा, उसकी कुछ 1200-1300 साइटेशन, और वो पेपर है कि जिसकी अंदर कोई काम की बात मैंने नहीं लिखी। All I said was that this myth about big data is greatly misleading. First of all, it doesn't have to be big. ठीक है ना? अगर मेरे पास 2 लीटर की बाल्टी है तो 3 लीटर मेरे लिए big हो गया। Right? So big data doesn't really mean that you have to have petabytes of data. Whatever you cannot analyze or store is big data. Secondly, it's about volume. That's one thing big. It's about velocity if it's coming in. ये जो call detail records होते हैं cell phone companies के, वो milliseconds में millions of records आ रहे हैं, so उसकी velocity बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से banking के, so the big data is very useful for cellular companies. It's very useful for big techs, but it has limited benefit in my view for economic development, poverty alleviation. वो काम जो है वो still it has to be very individual based, और वो survey data भी उस पर काम करेगा। और फिर big data का बड़ा problem जो है वो ये कि big data when you have 3 million observations you have positive correlation between 2 variables, कुछ भी कर हर चीज़ को significant रहती है statistically। 100 million पे तो सारे regression करने की जरूरत ही नहीं रहती, आपको पता है कि सब statistically significant, क्यों अपने कंप्यूटर को पसीना नहीं। लास्ट में बहुत सारी आपने इतनी सारी बातें की तो बाकियों का टाइम नहीं देता। एक हमारे यहाँ की डेंसिटी, एक आपने पेपर प्रेजेंट किया था कि ये जो हमारे पास कैरिज फैक्ट्री के सामने है, इट्स मोस्ट डेंस एरिया इन द वर्ल्ड, ये जो रावलपिंडी का एक लाख, ये कराची में आपने अर्बन फोरम पे एक अपना जो है वो एक हमारे यहाँ डेंसिटी है जो डॉक्टर दीनुल हक लोग जो है बात करते हैं कि इट शुड बी वर्टिकल डेंसिटी। तो अब बात यह है कि ये डेंसिटी के हम चक्कर से किस तरह से कौन सी जो है वो एक आपने आज जो है छोटा सा वो पेरिस वाला वो जो मॉडल जो है वो दिखाया, तो व्हाट शुड बी द बेसिकली जो है वो वे आउट फॉर हैंडिंग दिस डेंसिटी, जो जैकब फ्रेंडली डेंसिटी जिसको हम कहते हैं। I have tough time. Jane Jacobs was a neighbor to our university, सड़क के दूसरी तरफ रहती, so I have a big issue with what she said. So I'm gonna spare. You have to read her first. वो Jane Jacobs उन खुश नसीब लोगों में थे जिनको लोग मुकल्लिद हैं बगैर पढ़ने के बाद बात करिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अर्बन सेंटर्स में आपके पास ज़मीन नहीं है, राइट? सो यू हैव टू बिल्ड हार्ड एंड द काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स दैट यू हैव, जो हमारी जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, कोई ऐसा मुल्क मुझे ये शहर बता दीजिए कि जहाँ लो राइज पे आपने डिमांड सेटिस्फाई कर, देयर इज नो वर्केबल मॉडल एटलीस्ट आई हैव सीन वेयर लो राइज सॉल्यूशंस हैव वर्कड. So that density may not be tied to a metric threshold density, but you really have to build up. जब मैं टोरंटो मूव हुआ था तो डाउनटाउन टोरंटो में तो 3-4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, ठीक है, बिल्डिंग्स ही नहीं. अब डाउनटाउन टोरंटो में सैकड़ों पिछले 25 सालों में हाई राइज बिल्डिंग्स बनी. And we're not talking about high rise as in 60 story, 80 story, because you have to look at the economies. And apologize if I sound like an engineer, but at 300 meters and above, जो कि यहाँ कोई नहीं बनाएगा, लेकिन at 300 meters and above, that building is very expensive to construct, 1,000 square feet. Even 50 meters and higher, it's very expensive. Then you have a very sort of, you look at the populace, यहाँ लोग जहाज में वो गैस का चूल्हा खोल देते थे, ये जहाज हद से वापसी पे फट गया था, ठीक है. अभी इन्होंने ट्रेन में कनेक्ट खोल के वो चाय बनाने शुरू कर दी, वो आ रहे थे मौलाना साहब के मुकल्लिदी, ठीक है, कुछ ट्रेन चला दी. तो जब आप 10 स्टोरी से ऊपर जाएंगे तो 10 स्टोरी से ऊपर तो जो आई थिंक अप टू 7 floors you can take the fire engine and the ladder reaches up to 7th floor. पाकिस्तान में 7 फ्लोर से ऊपर ना जाइए, क्योंकि फिर जब आग लगेगी तो बड़ा मसला, क्योंकि आपके एक तो ये कि हमारे बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, वो उतरेंगे भी नहीं सीढ़ियों से. तो when tragedy happened, when it would be horrendous, right? तो लेकिन सब आपको मैंने दिखाया फ्रांस का, वो जो तस्वीर दिखाई पहले हाउस बनाई, वो सारी 5 to 7 स्टोरीज में उन्होंने डेंसिटी अचीव की, कहीं क्राउडिंग फील नहीं होती,
it feels like the best place on the planet. When you walk through the streets of boulevards in Paris, it's all 5 to 7. So what I understand from what you have said is you're saying that the void is building this fascination with low rise. There are plenty of good workable models जहाँ आप mid-rise में ला सकते हो. The urban population densities in Paris rival that in Hong Kong. क्योंकि होता ये है कि एक टावर आपने खड़ा कर दिया ना 70 फ्लोर्स का, तो उसके इर्द वो पार्क्स बना देते हैं, ये गॉल्फ कोर्स, तो नेट डेंसिटी उतनी ही रहती है. ऐसा तो नहीं होता एक टावर के साथ अगला टावर. So you have to realize. दूसरी बात ये भी समझने की है कि if you look at Manhattan, they have very high rises, abundance of high rises buildings. But you also look at the fact that the bedrock is very close to the surface. In fact, if you go to the Central Park, you see the bedrock protruding. ज़मीन से निकल रहा था बाहर. आप देख सकते हैं. जब bedrock ऊपर होगा तो आप बड़े आराम से फाउंडेशन बना सकते हैं high rise. So you really have to look at the geomechanics of the place. लाहौर की अलग होगी, इस्लामाबाद की अलग होगी. फिर हम seismic region में रहते हैं. So you can build smarter, but it cannot be built at low rise to satisfy the demand. That's what my understanding of Dr. Arthur is. Professor, I'm Sabah from Corporation Council. I have a question. I mean, the models you were mentioning in the start of your presentation, do they look at household projections or kind of household demand-based energy projections? I don't know if they do cover, because I'm currently working with people news and the council is working. I was there to initiate this project to work on energy projections of households based on different scenarios, 11 scenarios are. So they are doing these projections based on Propane website software. So there were some Canadian officers there in this conference. They are doing this with the help of human data. The Canadians have already done these household projections based on the urban scenarios. So I just want to incorporate your models if they are useful for our research for this project. Canadian को छोड़ेंगे यहाँ PIDE की publications देखें, household projections की. After the 1998 census, there are a couple of publications actually this thick where demographic models were developed. PIDE is very strong and there are people in population census organization. There's a lot of work. Part of PIDE, so I have done my MSc starting from here to the end. मुझे नाम याद आ रहा है, वो याद है डॉक्टर अशफाक जब होते थे, so there was a very detailed manuscript prepared publication on demographics and forecasting, and it was all done. So there's a lot of work already done here. But do say David Foote is our primary demographer in Canada. The way he explains it, forecasting population is very easy. अगले बरस मैं certainty के साथ आपको बता सकता हूँ कि आप एक बरस और आपकी एज बढ़ जाएगी. Yeah, we have done population projections, of course. I mean, we have all done all the fertility modeling and population projections. They are really different from the household. The estimated demands for projections based on the household size and different. Yeah, energy demand, I don't have any idea. It's not very embedded. Anybody else? Ji, look at that. You said that we should leave port out of the urban issues, and here we have a court ruling which says that we should take Karachi back to 1960 and remove encroachments and make PIDE Karachi like it was in 1960. So here we have a case where port is intruding into the public sphere and urban management, which is not, I think, right. And secondly, I want Dr. Huck's view on building new cities, and we have put this concept of ghost cities, and even in Dubai they built huge infrastructures and they're lying empty. So densification, I don't know, building new buildings just to fuel the aggregate demand helps growth or not. जी पहला कमेंट था कि
अदालतें अपने दायरा कार से इख्तियार करें, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें शर्म भी नहीं है, हमें खुलकर कहना चाहिए। किसी अदालत का तो रोल ही नहीं है रोटी की कीमत फिक्स करने या स्कूलों की फीस फिक्स करने का। दैट्स अ वेरी अनवेलकम इंट्रूजन इन दी पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। डैम का तो देखिए, वो दानिश मुस्तफा लंदन में जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये नहीं बन सकता, तो आपके चीफ जस्टिस साहब की तो खैर प्रॉब्लम दिए होंगे एनर्जी। मतलब देखिए, आपको अल्लाह मौका देता है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का, कर लीजिए अगर आपको डैम में इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो फिर उनकी सुनिए जिनको आता है काम, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कभी जाकर किसी डॉक्टर को मशवरा नहीं देता कि डॉक्टर साहब मैंने दवा दे दी, मैंने तकलीफ हो, मैं जाकर डॉक्टर साहब बताइए अच्छे मैं ले लेता हूँ जो भी बताते, मैं तो नहीं उनसे बहस कर। तो जो काम आपके नहीं बना कीजिए, दिस इज डू नॉट, ये हम अपना तो मुआशरा ही ऐसा है। आप बच्चों की जब शादी होंगी आपके माँ बाप पैदा करेंगे उसमें, उनका काम ही पेरेंट्स हैव नो रोल इन डिसाइडिंग हू यू शुड गेट मैरिड, लेकिन उन्होंने इंक्रोच कर दिया। तो दिस सोसाइटी इज इंक्रोच सोसाइटी ऑन एवरी एस्पेक्ट। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, आप गिव अप कर देते हैं, ठीक है जो माँ बाप करेंगे मैं करना नहीं, तो फिर जो साकिब निसार के डैम बना रही उनकी करें। तो यू रियली हैव टू चेंज द सोसाइटी। ऐसा नहीं हो सकता। दादा जी, औरतों की इज्जत, जब घर में आप अपनी माँ को मार पीटता देखें तो देन इट नॉर्मलाइजेस अ लॉट ऑफ इरेगुलर थिंग्स, इट डिस्ट्रॉयज द वेरी फैब्रिक ऑफ इट। ठीक है, मुआशरे में औरत की इज्जत माँ की इज्जत से शुरू होती है ना। इफ यू जस्ट एबल टू प्रिवेंट हर डिग्निटी और प्रोटेक्ट हर डिग्निटी, द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी विल स्टार्ट टू फंक्शन। अपने जो बेसिक राइट्स हैं उन पर एक्सरसाइज करें। क्यों, आप कौन होते मेरी शादी का फैसला करने? जस्ट ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं, मुआशरे का मसला है। आई एम नॉट सिंगलिंग आउट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बड़े लोग आज भी कॉन्स्टिट्यूशन तो 600 का कागज है, इसको फेंक दो डस्टबिन में, राइट? सो यू रियली हैव टू आपको और मेरा रिश्ता जो है ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, मुआशरे की बनते वो तो नहीं चीज़ें। अच्छा, दूसरी जो बात है कि देखें, मैंने हकीकत अगर ये आपको तासुर लगे कि घर बनाने से इकॉनमी खड़ी होगी, ये मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी ओवर क्राउडिंग आपके घरों में है कि एक ही कमरे में मियाँ बीवी भी सो रहे हैं, 3 बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे तो पहले छोटे थे बड़े होते हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, राइट? इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सोशल, आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, यू आर ऑल इट एल्स, यू हैव टू रिलीज दैट प्रेशर। उससे फिर लोगों के दिमागों पे स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कुछ भी नीचे द स्पेस। मैं तो एक दफ़ा तहकीक करने की कोशिश करता, मुझे हो नहीं रहा। I think that divorce rate should be higher for people in Canada who live in smaller apartments. मैं जब बेगम से लड़ता हूँ तो मैं एक कमरे में चले जाता हूँ, वो दूसरे कमरे में चली जाती है। अगर वो 2 कमरे ना हो तो क्या करेंगे? हमने साथ निपटे गए। आप बाहर चले जाएंगे। Any last question, Ji? Mixed use. You know, I live on Putsa Road. So it has like 18 schools, 5 big banks, multitudes of supermarkets. So I consider that area mixed use, and I think a lot of Pakistan is like that. It's just our urban elite class which lives in not mixed use environment. So why does so much focus on mixed use? It's a hell, crossing Tulsa Road in the morning or coming back. It's a hell. But we live in a mixed use society basically. देखिए, वो मिक्स यूज नहीं, वो अनप्लान्ड यूज होगा। ठीक है, अगर वो स्कूल वहाँ खुल गए हैं जो घरों में खुले गए, no, if they have opened schools in residential properties, right, without proper parking facilities and access and egress points, then that's not mixed use. Let's not confuse. Lack of planning or poor planning is not synonymous with mixed use. That's number one. And then the second thing is that the one thing that I would love to, and I had made an offer to Dr. Saab, मैंने कहा जी मेरी खुशबख्ती होगी कि मुझे यहाँ direct supervision मिले PhD students की. I would love to be the primary supervisor for people who want to work on Pakistani projects. And one of the things is कि देखिए हम लोग क्यों बात करते हैं, ये जितनी जो new construction हुई है ना, let's look at the number of homes built in the last 20 years in Pakistan, but at the neighborhood level. And see, देखिए मैं गवाल मंडी रावलपिंडी से, ठीक है, मेरे एक घर गवाल मंडी रावलपिंडी में, दूसरा अंदर शहर पेशावर में, कोई घर नहीं बने वहाँ पर, जो टूटे हैं वो दोबारा बने, नए घर नहीं बने, गवाल मंडी में कोई नए मकान नहीं। तो ये जो सप्लाई है घरों की वो सारी DHA टाइप और बहरिया टाउन में हुई है। जो बाकी घर है उनमें सिर्फ ओवर क्राउडिंग हुई है। जहाँ पहले घर में एक घराना रहता था वहाँ 2 रहते हैं, उन्होंने 3 कमरे डाल के और कर दिए। सो क्राउडिंग बढ़ी है, घर नहीं बढ़े। That's why I'm saying that we have to focus on supply
Because if we let the supply happen as it is happening in very controlled environments for the people who are privileged, and they are encroaching on other people's land. Actually, thank you very much, Murtaza Sahab. I think the main message that I get, which I think is important to learn, is that it's mostly the planner's fault. The planner is over-regulating the city. जो आप बात करेंगे mixed use की, वो planner हमें mixed use बनाने नहीं देता, लोग बनाना चाहते हैं, market बनाना चाहती है, और वो obviously आपको hand over हो जाता है कि जी घरों में वो स्कूल बन रहे हैं, फिर जज कहता है घरों में स्कूल नहीं बनना चाहिए, फिर वो पुलिस वाला आता है वो उसको withdraw करता है. Question is, human beings want to live in a certain way as they've done traditionally, which is a mixed-use society जहाँ के कुछ भी बन सकता है, तरीके से वगैरह बन जाता है. थोड़ी बहुत प्लानिंग की जरूरत है, बट लाइट टच. हमारे यहाँ जो मसला है, जो हाइराइज की बात करें, न्यू सिटी की बात करें, वी वांट टू प्लान टू मच. वही बात है ओवर रेगुलेशन की मैंने बात की. ओवर रेगुलेशन, यू वांट टू ओवर रेगुलेट एवरीथिंग अंडर द सन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बताया जाता है कि 5 फुट इधर, 2 फुट इधर, 3 फुट इधर, 4 फुट इधर, वो बताते हैं हमें, येट घर के बाद साइड वॉक करेंगे. सो द क्वेश्चन इज रियली, वी लिव इन ओवर प्लान्ड एनवायरनमेंट वेयर द मार्केट डजंट वर्क. जब मैं हाई राइज कहता हूँ, इट डजंट मीन कि everybody will go to 100 stories, because as you said, the cost of construction rises non-linearly. As you go higher, it gets higher. But at the same time, we must respect market demand. The density in the border city in Lahore is like God knows how much. But that is the uncomfortable, unplanned, stupid density. Not unplanned, over-regulated. There's a difference between over-regulated and unplanned. Over-regulated. जब हाई राइज बनेगी, हाई राइज ये नहीं कि people go to 100 stories. 100 stories की बिल्डिंग शायद एक ही बने कभी जिंदगी में, मतलब 10 जिंदगी में. Let people go as high as they can. मार्केट देख के करेंगे, सॉइल कंडीशन देख के करेंगे, सब कुछ देख के करेंगे, बेवकूफ़ी तो नहीं है ना. अब जब आप कहते हैं कि जनाब एक सड़क पे सड़क बन सकती है, तो फिर वहाँ बन जाती है और खाली रह जाती है. If you let people make, for example, Krishnanagar, Lahore, why can't you go high? If you have, that's the ideal house mentality. समनाबाद चल जाए, आइडियल हाउस वो रिवाज के आदमी ठीक है, कृष्णनगर के साथ बनेंगे सर, वो बनने देते. तो अब अगर ये बनने दें, अभी एलडीए से यही लड़ाई हो रही है. 15 को अगर आप यहाँ हैं, 9 को, तो हम एलडीए के साथ एक बहस करें लाहौर में इसी चीज़ पे कि भी आप लिबरलाइज क्यों नहीं कर रहे. द प्रॉब्लम इज आवर प्लानर्स डोंट वांट टू लिबरलाइज एनीथिंग. दे आर फोर्सिंग पीपल इनटू लिविंग इन कभी होल्स विदाउट एनी प्राइवेट स्पेस जो आप करें, ऑल्सो फोर्सिंग पीपल टू लिव विदाउट पब्लिक स्पेस. तो ये एक अजीब ओवर प्लानिंग का माहौल है जिसको हमें चैलेंज करना चाहिए. एंड आई थिंक Murtaza has given us a lot of food for thought, and we will take your challenge up. Please remember, he's offering to supervise PhD students, and he keeps to his word. So I would take him up, please. All you students there, you couldn't get a better supervisor. If you are ready to take on this challenge, please talk to him. Thank you. Thank you very much.